डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अपने घरों के अंदर बिल्कुल महफूज होंगे। द स्कूल्स आर ओपन फॉर क्लास 10th एंड 12th स्टूडेंट्स एज पर द गवर्नमेंट ऑर्डर्स विथ 50% कैपेसिटी। लिहाजा आप स्कूलों में आ सकते हैं और अपने आप को फ़िज़िकली मुस्तफ़ीद कर सकते हो, क्योंकि जो ऑनलाइन मोड है ये फ़िज़िकल मोड के लिए सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता है। डियर स्टूडेंट्स, आपके एग्जामिनेशंस आने वाले हैं आफ्टर द एंड ऑफ अक्टूबर। इन अक्टूबर के बाद आपके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। जैसा जो कुछ भी आपने ऑनलाइन मोड के ज़रिए या कम्युनिटी क्लास के ज़रिए सीखा है और जो आप सीखने जा रहे हो, अभी 2 महीने का टाइम है, ये आपको प्रिपेयर काफ़ी ज़्यादा करना है। 30% कंसेशन है और मुझे उम्मीद है कि आप बेहतर कर पाओगे। यस्टरडे स्टूडेंट कॉल्ड मी, एक स्टूडेंट ने कल मुझे फ़ोन किया कि मेक मी लर्न वंस अगेन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस इन केस ऑफ पास्ट सिंपल टेंस। यानी मुझे समझाए कि एक्टिव और पैसिव वॉइस क्या होती है, लेकिन किस टेंस में सिखानी है, पास्ट सिंपल टेंस में और सिंपल पास्ट टेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो, पहले आपको ये जानना है कि सिंपल पास्ट टेंस होता ही क्या। सिंपल पास्ट टेंस is a tense that's used to refer the actions that are completed before the present time, whether this time is the remote past or the recent past। ये वो actions होते हैं जो present time से पहले हो चुके हैं। इसमें वो एक्शंस बताए जाते हैं, चाहे ये नज़दीक का पास्ट हो जिसे हम माजी करीब कहते हैं, या दूर का पास्ट हो जिसे माजी बईद कहते हैं। सो सिंपल में आप इस तरह याद रख सकते हो, ए टेंस इन विच यू फाइंड द सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज पास्ट सिंपल और सिंपल पास्ट। यानी जो टेंस, जो सेंटेंस आपको मिलेगा, इसमें वर्ब की दूसरी फॉर्म जिसमें होती है, ये पास्ट सिंपल होता है या सिंपल पास्ट होता है। और वर्ब की ऑलमोस्ट 4 फॉर्म्स होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल, और जिसमें दूसरी फॉर्म वर्ब की होती है वो पास्ट सिंपल होता है। चलो हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। आई वेंट टू स्कूल, वेंट सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, ये गो की सेकंड फॉर्म है, लिहाजा ये पास्ट सिंपल है। आई किक्ड ए बॉल, किक्ड दूसरी फॉर्म है किक की, लिहाजा ये पास्ट सिंपल है। शी पास्ड द एग्जाम्स, पास्ड दूसरी फॉर्म है, लिहाजा ये पास्ट सिंपल है। शी डांसड इन द हॉल, डांसड सेकंड फॉर्म है, लिहाजा ये पास्ट सिंपल है। सो सिंपली यू हैव टू कीप इन द माइंड that past simple is a tense in which you find the second form of the verb, and it is used to refer the actions that are completed before the present time, whether it is the recent past or the remote past। अब सवाल पैदा होता है कि एक्टिव और पैसिव वॉइस क्या होती है। एक्टिव वॉइस इज अ वॉइस इन विच सब्जेक्ट गवर्नस द वर्ब और सब्जेक्ट डोमिनेट्स द वर्ब। और सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट एक्शन डूअर होता है और वर्ब एक्शन होती है, और ऑब्जेक्ट जो होता है वो एक्शन रिसीवर होता है। सो सिंपली यू हैव टू कीप इन द माइंड दैट एक्टिव वॉइस इज अ वॉइस इन विच द सब्जेक्ट गवर्नस द वर्ब, whereas the passive voice is the voice, or passive sentence is a sentence, or passive verb is the verb where the subject of the verb is acted upon। Take an example, I kicked a ball. Here I is subject, kicked is the verb, second form of the verb, ball is the object। ball जो है object है, kicked second form of verb है, लिहाजा ये past simple है। I subject है, subject काम करने वाला होता है और verb काम होता है। जो ऑब्जेक्ट होता है ये एक्शन रिसीवर होता है, इसे उर्दू में महफूल कहते हैं जिस पे काम होता है। सब्जेक्ट को फाइल कहते हैं, काम करने वाले को कहते हैं, और ऑब्जेक्ट सब वर्ब को फैल कहते हैं जो काम होता है। आई किक्ड ए बॉल इज ए पास्ट सिंपल टेंस एंड इट्स आल्सो अ पैसिव वॉइस बिकॉज इन विच द सेम सेंटेंस द सब्जेक्ट गवर्नस द वर्ब। आई किक्ड ए बॉल, जब हम इसको चेंज कर लेते हैं, इसको पैसिव में बदल देते हैं, तो बिल्कुल आसान है। आई किक्ड ए बॉल, द बॉल वाज किक्ड बाय मी।
In passive voice, always third form of the verb is used. Remember, in passive voice, always third form of the verb is used. Uh, or also in passive voice, the subject of the verb is acted upon. I kicked a ball. The ball was kicked by me. Take one more example. Rashid played chess. Rashid played chess. Rashid is the subject, played is the verb, chess is the object. But tennis is in the past simple or simple past because played is the second form of the verb. Rashid played chess. In passive, the subject of the verb is acted upon, or we take the object first in passive voice. Rashid played chess. Chess was played by Rashid. It is so simple. But you have to keep in the mind, आपको दिमाग में रखना है, in a passive voice, subject of the verb is acted upon. It's never a normal voice. In active voice, the subject governs the verb. Take one more example. Rashid planted a tree. Rashid planted a tree. Planted second form of verb है. Rashid subject है. A tree object है. और इसको हम चेंज कर लेते. Tree was planted by Rashid. Remember, with every singular object we use was with third form of the verb and the sentence gets converted into passive voice. Take one more example. Through examples you have to learn it. Examples के ज़रिए आपको ये सीखना है. Imran hit a ball. Here Imran is the subject, hit is the verb, hit is the second form of verb, ball is the object. Imran hit a ball, hence it is active. Its passive is a ball was hit by the Imran. But you have to keep in the mind that passive voice is a voice in which the third form of the verb is used and in which the subject of the verb is acted upon. Whereas in active voice, the subject dominates the verb or subject governs the verb. And past simple is a tense in which you find the second form of the verb, or past simple is a tense that refers to time, that refers to actions that are completed before present time, whether it is the remote past or it is the near past. Take one more example by which you are going to learn what is active and passive. Khurshid caught a bird. Khurshid caught a bird. Here Khurshid is subject, caught is verb, bird is object, and caught is the second form of the verb, so it is past simple. Khurshid caught a bird. A bird was caught by Khurshid. So simply you have to keep in the mind that active verb is a verb in which subject governs the verb, and passive verb is a verb where the subject of the verb is acted upon. In passive voice, always third form of the verb is used. And when we change active voice into passive voice, its meaning never changes. It is only its voice gets changed and its grammatical meaning never changes. और मुझे उम्मीद है कि आपके जहनों तक ये बात पहुंची होगी कि एक्टिव और पैसिव वॉइस क्या होता है और पास्ट सिंपल में हम एक्टिव और पैसिव वॉइस कैसे कर लेते हैं. इन केस ऑफ एनी कन्फ्यूजन, अगर कोई कन्फ्यूजन हो जाता है आपको वीडियो देखने के बाद, यू कैन ड्रॉप ए मैसेज फॉर मी. आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हो, स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज डाल सकते हो, एंड आई विल रिपीट द थिंग्स. मैं इन चीज़ों को रिपीट कर लूँगा, एंड बाय repetition you will learn the things well in the end. Thanks. Be well, asset.